Good afternoon, dear students. I am Smita Patel from TPS High School, Bandpali. Welcome you all to this live virtual class from our Sundargarh district. So, dear students, I hope you all are enjoying rainy season. As in the previous class, our Vijay sir explained all things bright and beautiful, all creatures great and small, all things wise and wonderful, the Lord God made them all. So nice. So Vijay sir so beautifully explained that God has given us so beautiful nature, river, trees, flowers, colorful birds, and so many things. But what we are doing, we for our benefit we are destroying this all these things. We are cutting trees, we are making buildings, industries, and so many. And also for that only we are facing so many consequences. So as God is our Almighty, we all know, isn't it? So whenever we face any problem, we say to our God. जितेबले भी आमे किछि प्रॉब्लम फेस करूँ आमे काको रिक्वेस्ट करताऊ प्रथमे आम मनरे आसी कोन भगवान को नाम आसे नहीं जेमती कि फॉर एग्जांपल इफ यू हैव एनी एग्जाम, let's English exam, and you have not prepared well for that exam. So what you say? God, please don't send English ma'am to our class, please, like that, isn't it? So जेतेबेले आमे किछि प्रॉब्लम फेस करू, जेतेबेले हमको किछि गोटे दरकार थाए, God please give me iPhone, like that. So in this chapter, a farmer named Lencho, he prayed to God. For what? We will see in this chapter. So let's go to the smart board. So dear students, here in the smart board, what you are seeing? That the picture of letters, nahi? So तुम्हें मैंने nowadays we are not using these letters. We are using modern technology to convey our message to our near and dear one, from like WhatsApp messages or mail we are sending, nahi? But in our childhood we used to send our messages to our near and dear through these letters. Okay, so when we write a letter, we used to write to whom we are sending. To whom we are sending, we will write their name and address, like that. So, but in this chapter, we will see a Lencho, means a farmer named Lencho. He wrote a letter to here, whose name is written here? To God. So here in this chapter we will see the farmer named Lencho. He wrote a letter to God. This chapter was written by Gregorio Lopez Fuentes. Was the author of this. He was the writer Gregorio Lopez Fuentes. Tikke कष्ट अछि, but you have to remember this name because in multiple choice question you will get this name. Gregorio Lopez Fuentes was a Mexican novelist. से केउ देशर थिले? मेक्सिको देशर थिले. से मेक्सिको देशर थिले एवं से एकाधारे रे कोन थिले? He was a novelist, poet and journalist. He had started writing at the age of 15. 15 वर्ष बयसरू से लिखिबा आरंभ कर देथिले, नहीं? Then his books are related to civil conflict. आमर समाज रे होतबा अराजकता जो द्वंद्व माने जो सब प्रकार conflict माने हेई थाए से विषय से प्राधान्यतः तांकर स्टोरी थाए एवं हास्यपूर्ण स्टोरी मध्य से लिखि थांती आउ सोशल कल्चर उपरे मध्य से लेखुथिले. His stories are exciting and humorous. बहुत हास्यपूर्ण थाए एवं बहुत exciting मध्य थाए. You know what is exciting, okay?
when you watch any movies that is so much exciting for you, like that say both exciting stories lekhuthile. Many of his works are concerned with the operations of Americans mankara bibhinna prakara tankara jo प्रकार जो समाज अराजकता तापरे तांकर जो कॉन्फ्लिक्ट माने थिला से मानक ऊपर से बहुत लेखालेखी करुले. ही वाज अवार्डेड द नेशनल प्राइज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस इन 1935. इन 1935 ही वाज अवार्डेड विथ नेशनल प्राइज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस से प्राइज ग्रहण करथिले. So dear student, it's all about our author. Now we will go to the text. Okay, so you also read with me. You also try to read the text with me. The house, the only one in the entire valley, set on the crest of a low hill. From this side one would see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour, or at least a shower. Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. माने मध्य मो सहित पढ़िला तो सो ए चैप्टर तुमर पढ़ा सरी बोधे समस्त स्कूल रे, किंतु आमे एटा को रिवाइज कर दबा सो दैट हमको एनुअल एग्जाम रे आउ पढ़िया को पड़िबो नहीं. So listen to me carefully. This one is the your first para. Crest. What is the meaning of crest? Top or the highest part of a hill. Then dotted with means scattered over an area. Intimately, closely. Downpour, heavy rainfall. Then harvest, cutting crops. So dear students, let's understand the text. The house, the only one in the entire valley, संपूर्ण valley रे. Here you can see entire valley रे केवल गोटे घर अछि. In the entire valley set on the crest of a low hill. से जो उपत्यका जो थिला से लो हिल जोटा कि जहार उच्चता कम थिला, लो मीन्स कम, से valley रे गोटे कौन थिला गोटे घरटे थिला हैला, गोटे हाउस टे थिला. फ्रॉम दिस हाइट, किंतु लो हिल रे थिले मध्य सेई हाइट टा एते माने एते ऊपरे थिला जोथरु की तमे कोन देखि परिबो. वन वुड सी द रिवर, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ द फ्लावर्स हैला. से ऊपरो आमे देखि परिबा जेते बेले फूल माने कोन जेते बेले हमरो फूलटा राइप रे हे जाए सेते बेले देखिबो येलो फ्लावर. इट शोज दैट हमरो कोन फसल एबे कोन हेबार अछि, संपूर्ण हे गलानी, परिपक्व हे गलानी, ताहा शो करे नै ए जो येलो फ्लावर्स नै. सो फ्रॉम दिस साइड वन वुड सी द रिवर, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ द फ्लावर्स. The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. माने ए समय रे एबे सेई जो फसलटा सेई फील्डटा कोन दरकार करथिला, गोटे हेवी रेन. एठी आमे लिखिचे डाउनपोर मीन्स हेवी रेनफॉल, गोटे रेनफॉल भलो वर्षाटे से दरकार करूथिला नै. सो थ्रू आउट द मॉर्निंग जेहेतु से माने से फसल अमल हेबा उपरे थिला एवं गोटे वर्षा ताको दरकार थिला, सेति पई लेंचो जहार के एडा फसल से कोन करथिला, से कुआडे देखुथिला जोआडे हमर कला मेघ घनी आसीबो से आडू से नॉर्थ ईस्ट आडू को से देखुथिला. सी लाइन बाय लाइन तुमको मने रखिया को पड़िबो. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रे नॉर्थ ईस्ट को माने एई गोटे वर्ड ऊपरे ही क्वेश्चन गोटे 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 सेंटेंस रो गोटे गोटे वर्ड ऊपरे ही तमरो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आसी थाए. तेणु तमे सबु लाइन को भलो भाबरे बुझिबा को चेष्टा करिवो. कुआड को देखुथिला ना टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट. सो लेट्स गो टू नेक्स्ट. Now we are really going to get some water. तमे माने मध्य मो सहित पढ़ो. Now we are really going to get some water, O men.
The woman who was preparing supper replied, "Yes, God willing." The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, "Come for dinner." It was during the meal that, just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall in the northeast. Huge mountains of clouds could be seen approaching. The air was fresh and sweet. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. And when he returned, he exclaimed, "These are not raindrops falling from the sky. They are new coins. The big coins are 10-cent pieces and the little ones are 5 cent." So, only 5. Little ones are 5. Okay. So, here your unknown words. Cent means Latin American currency. आमे जमती rupees पैसा यूज करूछु सेठारे कोन cent यूज करा जाए. Supper means last meal of the day, जोटा कि dinner आमे कहि परिबा. Predict माने आमर फोरटेल द फ्यूचर. फ्यूचर विषय जो अनुमान करिबा, प्रेडिक्शन करिबा नहीं. अप्रोच मीन्स अराइवल. अप्रोचिंग माने अराइविंग. So let's understand the text. Now we are really going to get some water. किए कहला इटा? लेंचो कहला. कहा को कहला? ना ता स्त्री को, ता वाइफ को कहला, वुमेन. Now we really get some water. कौन देखी कि कला मेघ घेनी आसुथुवा देखी कि से कहला एबे आमे जेमती हेले से सकाळ जरू देखुथिला किंतु केते समय आसला राती जतबे से डिनर खाउचंती से संध्या समय रु से कोन कला मेघ देखी कि से प्रेडिक्ट कला माने कहिला जे एबे आमे जेमती हेले कोन वर्षा पाइबा. द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, वुमेन से डिनर प्रिपेयर करथिला एवं से कहला कोन Yes, God willing means God को इच्छा. God को जहाँ इच्छा ताहा हेबो. God को इच्छा जदि हुए ताले आमे वर्षा पाई परिबा. से सेमती कहला से कोन करथला से फूड प्रिपेयर करथला डिनर. Yes, God willing. The older boys were working in the field. से समय रे तांको बड़ छुआ माने से माने कोन करथले वर्किंग इन द फील्ड एवं छोटो माने कोन करथले दे आर प्लेइंग. Okay, so until the woman called, से माने खेलुले केते पर्यंत जेते पर्यंत कि सेही तांको माँ तांको खाइबा पई न डाकिचंती. Okay, so ए woman तांको डाकिले के लेंचर ऑफ वाइफ तांको छुआ मान को डाकिले come for dinner. So it was during the meal time, से माने जेतले खाउतले से समय it was the meal time that, just as Lencho had predicted. Lencho had predicted about what? About heavy rainfall. So predicted means what? जो पूर्वानुमान लगेइथिले जे जेमति ले वर्षा हेबो सेटा कोन हला? That was really happening now. So big drops of rain began to fall. से समय रे कोन हला? Big drops of rain began to fall. The air was fresh and sweet. Now we all are feeling that type of rain nowadays. नहीं आमे बे से वर्षा फील करूछु कि नहीं? Big drops of rain sometimes, then sometimes small drops of rain. So the air is also very much what? Fresh and sweet. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. से समय कोन लेंचो जेतु जे वर्षा पई एते अपेक्षारत थिले से कोन कले से बाहर को जाई कि जो वर्षा पई से एते तांको फसल पई से वेट करथिले से वर्षा बाहर को जाई कि से वर्षार बुंदा कोन से स्पर्श को से अनुभव करिया पई बाहर को बाहरले नहीं से feeling the rain, that rain on his body. से तार वर्षार अनुभूति से नेबा को चाहिए एवं से फील्ड को गले नहीं. तापरे
The man went out for no other reason than have to pleasure. Pleasure means what? उपभोग करिया पाई, आनंद उपभोग करिया पाई, नहीं, feeling of that ran on his body. And when he returned, he exclaimed. After returning to the house, he exclaimed. He tell loudly to all the members of his family that yes, we achieved the goal. What we are thinking about, what we are saying to God, that really happened today. Okay, so these are not. He exclaimed that he said to her wife and also his wife and also all his family members that today we received this drop of coin, the drop of rain in terms of coin. नहीं, coin जो अच्छी जो big drops गुड़ाक अच्छी सेटा होची कहा सहित से तुलना कले 10 cent सहित तुलना कले एवं छोटो ड्रॉप जो रेन गुड़ी को सेटा को 5 सेंट सहित से तुलना कले, नहीं ए काई कि से ड्रॉप्स ऑफ रेन गुड़ी को कॉइन सहित तुलना कले ना सेई रेन पाई कि ही सेई फसल तांकू कोन से फसल आउरी परिपक्व होई परिबो, नहीं आउरी भलो फसल होई परिबो सेथि पई. तो नेक्स्ट ए जो फर्स्ट टू पैराग्राफ अच्छी से तार एक्सट्रैक्ट माने तार समरी टाइप सिंपल सेंटेंसेस रे मु एटा कन्वर्ट करछि. तमे माने मध्य मु देखिछि लॉन्ग क्वेश्चन रे नेक्स्ट ईयर खाता सुजिला बेलकू पिला माने ट्रांसलेशन करती ग्रामर रे आउ सेक्शन रे, किंतु लॉन्ग क्वेश्चन गुड़ाक समस्ते प्राय छाड़ी दउचंदी. तमे माने कोन करबो प्रतिटी चैप्टर को पढ़ी सारला पोरे तुम निज वर्ड रे तमे जेमिति ताकू एक्सप्लेन करि पारिबो सेटा को तमे चैप्टर टाकू बुझिचो ताकू तुमे निज भाषा रे निजे जेमिति तमे ताकू भलो भाबरे एक्सप्लेन करि पारिबो जोटा जो वर्ड गुडी को तमे यूज करि पारिबो जोटा बुझुचो सेतिरे तमे एक्सप्लेन करिकरी निज भाषा रे फर्स्ट लेखिबो सो दैट यू विल एबल टू राइट एनी क्वेश्चंस आंसर माने सेई चैप्टर जो क्वेश्चन भी आसीबो तमे आंसर देई पारिबो हैला. आमे काई कि ना चैप्टर टा आमे बुझी जाउछु किंतु जते बेले क्वेश्चन किछि आसुची आमे सेतिरो आंसर देई पारुनु काहे कि ना आमे सेगुडी को कोन सेगुडी को आमे प्रथमरु रिवाइज करूनु ताकू आमे पार्ट बाय पार्ट सिंपल सेंटेंस रे विभक्त कर देबा जेमति कि आमे सेटा को आम भाषा रे आमे लेखि परिबा. Okay, English is not so much hard if you will try from now onwards. एबे ठू समय अच्छी गोटे गोटे चैप्टर सरुची से एबे ठू तमे चेष्टा करो से सिंपल सेंटेंस रे ताकू भाग करो एवं लॉन्ग क्वेश्चन माने जेतकीटा लॉन्ग क्वेश्चन हेई पारिबो एबे ठू तुमे सेटा को निज भाषा रे निजे लेखिबा को चेष्टा करो. ओके, एवं तुमे टीचर रो मध्य गाइडेंस नै पारिबो. सो हियर ए जो दुईटा पैराग्राफ अच्छी से आम कौन जानले ना लेंचोस हाउस वाज द ओनली वन इन द वैली सिटिंग ऑन अ लो हिल. फ्रॉम द हिल वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ फ्लावर्स. द फील्ड promised a good harvest but needed rain. नहीं, he looked at the sky towards the northeast. Lencho knew his fields well and predicted rain. नहीं, से तार खेत को भलो भाबरे जानी थिला एवं से वर्षा पाई पूर्वानुमान करथिला. His wife agreed saying yes, God willing. Next, the older boys से समय older boys माने कोन करथिले the older boy worked in the field से माने काम करथिले एवं while the younger one near the played near the house. The family had dinner से माने डिनर करले. से समय कौन है लेंचो प्रेडिक्ट करथिला कौन ना बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल. द एयर वाज केमति थिला स्वीट एंड फ्रेश. लेंचो वेंट आउट टू फील द रेन से हमर रेन को फील करिया पई बाहर को जाइथिला. ही वाज थ्रिल्ड एंड कंपेयर्ड द रेन ड्रॉप्स टू coins. He said the big drops were like 10 cent and 10 cent pieces and the little ones are like 5. एभली भाबरे तमे सुइटेबल तुमको जमती सुइटेबल लागुची सेमती तमे लेखिबो so that you will able to answer any question from that chapter. With a satisfied expression
you also read with me. With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers, draped in a curtain of rain. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. These truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. So, dear students, what are these words, unknown words? Draped means covered. Okay. One thing I want to say again, dear students, some chapters have their own words, own important words. नहीं समस्त सब चैप्टर मानकरे केतोटी वर्ड्स थाए जोटा कि सेई चैप्टर रिलेटेड ही सेटा इंपोर्टेंट शब्द गुड़े अटे तेणु चैप्टरटा पढ़िबा पूर्वरु तुमे से वर्ड गुड़ी को प्रैक्टिस करिवो so that you will able to give the answer कहीं ना से आंसर लिखिबा समय से वर्ड गुड़ी को तुमको जेमती ले यूज करिया को पड़िबो. So you have to practice them, you have to understand their meaning also and their spelling also. So here draped means covered, hailstones small ice ball like हमें ओडिया रे जो कहू कुआ पत्थर नहीं, then resemble look alike एका बोली देखा जिबा. Next expose to show something that is usually hidden, जोटा हिडन माने लुकायित भाव अच्छी ताकू पदा को आनिबा ताकू देखेबा, that is exposed. Then frozen so cold that it has become very hard. नहीं कुआ पत्थर गुडी को बहुत पूरा पत्थर भलिया टाण थाए सेटा कोन खपर को मध्य छिद्र कर दिए नहीं. So pearl costly stone, pearl रा कोन होते costly stone होते. So now let's understand the topic with a satisfied expression. शांतनामूलक एक्सप्रेशन सहित ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर्स. नहीं जितेबले से वर्षा गुड़िक है से समय से बहुत ही माने कौन सैटिस्फाइड फील कला जोटा से चाहूला भगवान ताकू सेटा प्रदान कले बोली. नहीं ड्रेप्ड इन ए कॉटन ऑफ रेन से कॉर्न गुड़िक कौन फ्लावर्स गुड़िक वर्षार एक सुंदर आवरण रे आवृत होई से कौन फील करथिले कौन निजे भी फील कले एवं से आमर राइप कॉर्न जोटा कि दरकार थिला तांकू वर्षा से माने मध्य एन्जॉय करछन्ती बोली से कहिले कि आमर लेंचो. बट किंतु से खुशी बेसी समय पर्यंत रहिला नहीं. सडनली हठात रे कोन हला ए स्ट्रांग विंड बिगेन टू ब्लो. स्ट्रांग विंड बहुत झड़ तूफान बहुत जोर रे आसीबा को लागिला. एलोंग विथ ता सहित कोन आसिला very large hailstones like this you can see se gudiko kuआ पत्थर गुड़िक पड़िबा को लागिला. began to fall. This truly did resemble new silver coins. एही बोली से गुड़िक देखा जाउतला चकचक करथला व्हाइट कलर आल्सो. सो एठारे लेखक कंपेयर करछंती एई hailstones को सिल्वर कॉइन सहित नहीं. The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls. See, boys माने से छुआ माने कोन आमे तुमे माने मध्य जेतेबेले सेमती कुआ पत्थर ओटे आमे कोन एक्साइटिंगली जाऊ सेटा को कलेक्ट करिया पे नहीं ले सेमती छुआ माने मध्य तांकर घर से माने कोन कले ताकू कलेक्ट करिया पे पदा को बाहरले नहीं. Next, it's really, you also read with me. It's really getting bad now, exclaimed the man. I hope it passes quickly. It did not pass quickly. For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as if covered with salt. Not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. Lencho's soul was filled with sadness. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, "A plague of locusts would have left more than this. The hell has left nothing. This year we will have no corn." So, what he said? Really getting bad now. तेबेले आमर वर्षा सांग को कौन आसिला बहुत जोर रे झड़ तूफान आसिला एवं कुआ पत्थर पड़िबा को लागिला.
से समय लेंचो जणैले आई होप इट पासेस क्विकली गोटे दुईटा तीन चार्टा एमती किसी फरक पड़ोनी हाँ यहाँ जल्दी शीघ्र क्विकली मीन्स व्हाट शीघ्र यह पलि जीव इट डिड नॉट पास क्विकली बट किंतु दुखर सहित कहवा पड़ी कौन से पास जल्दी कला ना कौन है फॉर एन आवर घंटा घंटा धरी कौन है से वर्षा है सबू उपरे कहा उपरे हाँ घर उपरे गार्डन उपरे हिल साइड एवं सबू भेलीटा होल भेलीटा कौन परिणत होगा द फील्ड वाज व्हाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट यू कैन सी हियर जमती कि गोटे सल्ट आवरण पड़ जाइए कुआपथर गुड़िक सबुआड़े आच्छादित हो गला तो जो कॉर्न फील्डटा कौन बहुत ग्रीनरी विथ डॉटेड फ्लावर्स देखा जाउथला सेटा पूरा नष्ट हो गला लेंचो सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस से बहुत दुख कला कहीं से तार बहुत कौन थी आशा थिला से बहुत भल हार्वेस्ट माने बहुत बढ़िया फसल से पाई परिबो बोली आशा थिला किंतु ताहा सबु धूलिसात हो गला नहीं when the storm had passed he stood in the middle of the field and said to his son जेतेबेले माने जो कुआपथर वर्षा बंद हो गला सेतेबेले से मिडिल ऑफ द फील्ड को गला से समय से कहला ए प्लेग ऑफ लोकस्ट मीन्स ये जो महामारी जो पोक जो थाए ए कीट जोटा कि आमर फसल को नष्ट कर दिए से कीट गुड़िक जदि आसी था एते फसल को नष्ट कर नतांते किछि आमे सेतिरु पाई थांते किंतु ए जो हेलस्टोन्स वर्षण हैला ताहा आम फसल को पूरा पूरी भाबरे कोन नष्ट करिदेला सो वी विल नॉट गेट एनीथिंग दिस ईयर से कहले आमे एई वर्ष किछि पाई परिबा नहीं so this one is the summary of this chapter this two paragraph so your time is very less this one I will send to your teachers also and you can write this one with yourself okay Lencho admired the field of ripe corn covered with rain a strong wind suddenly blew and large hailstone fell the hailstones looked like silver coin and the boys ran out to collect them the destruction what are the destruction happened the hailstone lasted for an hour nahi बहुत समय धरी ताहा चलिला डैमेजिंग द हाउस कौन कौन डैमेज कला हाउस गार्डन हिल साइड एंड कॉर्नफील्ड आल्सो द फील्ड टर्न्ड व्हाइट लाइक सॉल्ट फील्ड पूरा सॉल्ट रे परिणत हो गला सॉल्ट कवर टाइप हो गला all the leaves were gone from the trees nahi the corn was totally destroyed and the flowers were gone from the plants ru sabu flower gudiko kon hala se gudiko dhulsat egla se gudiko pole gala nahi Lencho was filled with sadness after the storm ei jo jhodo tufan pore se bahut kon egla bahut दुखी हो गला he stood the in the field से हमर फील्ड रो मझिरे ठिया कि तांको छुआ मानन को कहला कोन कहला that this year they will not get any harvest due to this destruction okay so next that night was a sorrowful word से जो रात्रिटा कोन थिला बहुत ही sorrowful थिला बहुत दुखदायक थिला all our work for nothing नहीं there's no one who can help us केही मध्ये हमकु सहाय्य करि परिबे नाही we will go hungry this year hungry means what is it भूखिला नहीं but the hearts of all who lived in that solitary जो एकुटिया घर जो थिला से घरे जो माने सब रहुचंती in the middle of the valley there was a single hope that is hope from God समस्तंकर काहाटो आशा दिला hope from God ठारू नहीं don't be so upset even though this seems like a total loss remember no one dies of hunger के कहउछंदी एटा लेंचो कहउछंदी तांको फैमिली मेंबर को जेहेतु से घरर मुखिया से किछि तो गोटे कहि कि समस्त को साहस देबे ना नहीं से कहउछंदी जे no one dies of hunger any God will help us नहीं से तांकु सांत्वना दौचंती तांको फैमिली मेंबर को that's what they say no one dies of hunger next and also the summary of this one
you will write by yourself and you will take help of your teacher. Okay, so next part. All through the night, Lencho thought only of one hope, the hope of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. Lencho was an ox of a man, working like an animal in the field, but still knew how to write. The following Sunday, at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. So, all through the night, Rati Sara, se kona Lencho thought only of one hope. Gotiye आशा से राति सारा भाबिबा पई लागिले कोन ना the help of God. से गॉड रु केमिति गॉड को केमिति प्रार्थना करिवे, हेल्प मागिबे कोन तांको कोन करिया भाई तांको एई खराब सिचुएशन रु बाहर करिवा पई से केमिति हेल्प मागिबे सेट विषय से चिंता करले. हुज आईज एज ही had been instructed see everything. कहार आखि सबुटा देखु थाए गॉड कर नहीं. सो इवन आमे जहा मन भितर चिंता करि थाउ ताहा न कहिले मध्य परिप्रकाश न कले मध्य गॉड जानि थांती नहीं. So Lencho was an ox of a man means what? Lencho was an ox of a man means से बहुत सरल एवं हार्ड वर्किंग लोक थिले नहीं. से बहुत हार्ड वर्किंग थिला एवं से कठिन परिश्रम करिकरी ए फसल अमल करबा को जाउथिला. बट ड्यू टू गॉड means all things whatever happen in our world means in our earth, that is due to God only. ये जो storm वर्षा हैला एथिरे लेंचो रो कोनोसी हाथ नहीं नहीं. सो से गॉड को अनुरोध करूची जे जहा मो द्वारा संभव थिला मु ताहा परिश्रम करिकी अमल करिया को जाउथिली. बट ड्यू टू हेलस्टोर्म I did not get that one. So now it's your turn. से प्रार्थना करछे now it's your turn, you have to help me. So एते परिश्रम कले मध्य से एते काम करूथुवा लोक थिले मध्य से कोनटे लेखिबा पई से जानुथिला. So से he began to write a letter which he himself would carry to the town. से मेल को पठेबा पई से निजे जीवो बोली की से चिंता कला. So this one the summary. Let's discuss the question. I hope you all understood the chapter very well and you will give the answer. So quickly one by one give the answer. Based on the detail of the house location, how can it best be described? Number 1. Give the answer. Which one will be the right one? Majestic, imposing, unique or solitary? Which one will be the right one for the house of the Lencho? Yes, we will say yes, yes. Switch on your mic. Not audible. Yes, yes. Now it's audible. Tell me. Option C. Very good. Option C is the right one. All through the night, Lencho thought only of his one hope. What was it? The help of God. The help of God. Very good. Option A, the help of God. Option A. Yes, very good. Option A, the help of God. Okay, this one right. Next, what is the Lencho not likely to think while looking at the field? Which one is the right one? From option A, B, C, D, which one is the right one? Option A. Option A. No, what is Lencho not likely to think while looking at the field? This one is the tricky one. Option C. Option D. Option D. Yes, option D is the right one. Very good. देखो, this one is the tricky one. What Lencho not likely to think? से कौन भाभी नथिला. I wish we have enough food to eat. से केबे से जेते बेले वर्षा हैला सेते बेले से कौन भाबिला. से ताकू से वर्षा ड्रॉप को से कॉइन सहित तुलना कला. किंतु वर्षा आइगला परे आमे बहुत भलो भाबरे फसल आमे पाई परिबा आमे माने खाइबा को हमको मिलिबो सेही जिंस से चिंता करनथला. So this one option D is the right one. Very good. Lencho is deaf when he says that's what they say. No one dies of hunger. तार को भावटा एठू जना पड़तला.
डाउटफुल थिला, स्ट्रेस थिला, कंफ्यूज थिला कि डिसमिसिव थिला, से को प्रकार एटा माने मंतव्य देला? ऑप्शन बी स्ट्रेस्ड. Yes. No, option D is the right one. उपेक्षा से उठे उपेक्षा पूर्ण ये मंतव्य देला, से भाई option D is the right one. Okay. So what things did the earth need? Earth कौन दरकार करतला? Fast. Tell me which one is the right one? Very easy one. One very easy. Let's give the answer. Which one is the right one? ऑप्शन बी. ऑप्शन बी. Option B. Very good. Next, the field of corn dotted with flowers means that dotted with flowers. What is the meaning of this one? Which option is the right one? Not a single flower was bigger than a dot. The flowers were scattered across. The flowers were shaped like dots, or the flowers had shrunk. Option B is the right one. Very good. Next, what does ox in the chapter mean? Ox को give the word use कराई थी. What is the meaning of that? Which one is the right one? Option B. In your mind? A domestic animal. No, here author. Yes, option. Hardworking and simple person. Yes, very good. Hardworking and simple person. एटा को डिनोट करया पई से ox word यूज करछंदी. Then what satisfied Lencho? Lencho को कोन satisfied कला? The falling rain. Option D. Yes, option D, falling rain. Next, what was Lencho's initial reaction when his harvest was destroyed by the hailstorm? Initial reaction कोन थिला? Yes, initially से केमती ये कला जते बेले hailstorm चला. Yes, Option D. He composed a letter to God asking for help. No, startingly से कौन थिला? से बहुत माने टिके कौन होते angry and टिके frustrated थिला ना starting behavior. Yes. So see, what was Lencho's initial reaction when his harvest was destroyed by the hailstorm? Asking for help to God. That was the later on thinking of that. से परे भाबिला सेटा. किंतु first तार reaction केमते थिला? He became angry and frustrated थिला. हैला? Next, in the story A Letter to God by Gregorio Lopez Fuentes, what natural Hailstorm. disaster? Hailstorm. Hailstorm. Very good. Next, why did Lencho go out? काहे की जाइतिला? बाहर को? To feel the raindrops. Very good. To feel the raindrops. Where was Lencho's house situated? Lencho's house को Crest of a low hill. Option A. Crest of a low hill. Yes. Okay. You just write down this long question. What happened to Lencho's cornfield after the hailstorm? How did he react to it? एटा long question तमरो एटा आसीबार संभावना कहीं ना लेंचो रो cornfield को कौन हैला नहीं केमती happened to the cornfield after the hailstorm परे कौन हैला सेटा लिखिबो और how did he react to it नहीं एथिरे तुम कौन वर्णना करिवो ना how all the corn were destroyed by the hailstorm and what are the reaction he gave to the what are the things he said to his sons, his daughter, that will also you have to write down. Okay, so let's discuss. After the hailstorm, Lencho's cornfield looked white as if covered with salt. The corn was totally destroyed by hailstorm. The plants lost their flowers and the whole valley looked like very sad. Nahi. Next, Lencho was very upset and heartbroken. Se both upset hoye thila, heartbroken madhya. When he saw his field, he felt very hopeless and worried about his family's future because they will not get any corn this year. Okay, they will. The only source for their family is what? This one, cornfield. So without it, how they will survive for the whole year? सेटा तांकर thinking थिला नहीं. So he was deeply saddened. तार प्रतिक्रिया किपरि थिला ताहा मध्ये लिखिबो. एही परि भाबरे तमे सबु क्वेश्चन गुडी को निजे तमे रीराइट करिवो so that you will able to give the answer in your exam. एटा एंजाइटी से किपरि एंजाइटी फील कला सेटा मध्ये तमे लिखिबो. Next, what made Lencho write a letter to God? कोन ताकू प्रवर्ताइला गॉड को लेटर लिखिबा पाई. एटा मध्ये गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन जेतिटा फर्स्ट पार्ट हमें जो पढिलु सेइतरे. सो
लेंचो वाज ए फार्मर तुम टिके इंट्रोडक्टरी पार्ट भलिया टिके लिखिदबो लेंचो वाज अ फार्मर हु लेड हिज फैमिली विद द हार्वेस्ट फ्रॉम हिज कॉर्न नहीं सेथिरे तांकर सेटा ही तांकर ओनली सोर्स ऑफ इनकम थिला किंबा तुम सर्वाइवल पई से सेटा ही करथिले नहीं सो द हेलस्टॉर्म हिट लेंचोस कॉर्नफील्ड एंड डिस्ट्रॉयड इट ताहा कोन कर देले डिस्ट्रॉय कर देले देन तुमे लिखिबो कोन ऑल इज हार्ड वर्क लॉस्ट ही that's why all his hard work he was left with nothing nahi Lencho was very worried about his family's future why he was worried because all things destroyed by the hailstorm eta tumbe lekhibo without the crops they would not have enough food for that year e bisare alochona karibo so his unwavering faith in God makes him to write a letter to God नहीं तार जो विश्वास थिला गॉड को ऊपरे सेटा तांको कोन करिया पई गॉड को चिट्ठी लिखिबा पई कोन करला प्रवर्ताइला ए विषय रे तमे लिखिबो तमे जिंसटा बुझुचो केवल तुमको लिखिबार सिंपल वे रे ताको परिप्रकाश करबार अछि इन इंग्लिश सो before facing any exam you have to write down by yourself first then you practice so that you will give able to answer in your examination तमे पूर्वरु ता पई प्रिपेयर हे गले तमे इजीली लिखि परिबो आंसर गुडी को तो दिस वन इज योर होमवर्क all of you write down this two question and also write down answers and show to your English teacher okay I hope you understood the chapter very well and you will listen to the instruction what I have said to you you will practice you should practice the questions okay whatever question from the chapter will come first you note down that one and write your answer first and show to your teacher so that you will able to give you will not be so much afraid of the question when you get in your final examination okay बहुत कहीं ना मु previous year रे देखली बहुत समस्ते long question answer माने ही छाड़ी चंदी तेणु तुमे माने चेष्टा करो एबेठू तुमे सेगुडी को प्रैक्टिस करो निजो सेंटेंस निजो वर्ड रे लिखिबा को चेष्टा करो so thank you dear students I hope you will do well